तेरी याद आती है, अल्लाह तेरी याद आती है। जब रोज सवेरा होता है, जब दूर अंधेरा होता है, जब दुनिया के इस गुलशन में फिर नूर का फेरा होता है, एक एक कली खिल जाती है और एक एक चिड़िया गाती है। इस ऐसे सुहाने मंजर में अल्लाह तेरी याद आती है। Donc ceci est un endroit où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, Imam Ali alayhi salam ainsi que Janab Hamza alayhi salam, ils étaient là pour accomplir les prières avant d'aller à la guerre de Uhud. Avant d'aller à la guerre de Uhud, ils étaient là pour accomplir le namaz. Donc nous sentons le parfum des bien-aimés d'Allah, le saint prophète Imam Ali alayhi salam, Janabi Hamza alayhi salam. Donc là, nous allons visiter bientôt le cimetière là où il y a les Shuhada et Uhud qui sont enterrés, et là où il y a eu la guerre de Uhud, où Janabi Hamza alayhi salam a été martyrisé et ses dents aussi étaient blessées, martyrisées. ये है मस्जिद मिस्रा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की ज़ियारत के लिए जाते थे ओहद पे, तो इस जगह पे थोड़ा आराम फरमाते फिर आगे जाते थे। और दूसरी रिवायत ये है कि जब आप जंग ओहद से वापसी आए ज़ख्मी हालत में, तो यहाँ आराम फरमाया था। ये इस जगह पे इन लोगों ने मस्जिद बनाई है जिसका नाम मस्जिद मिस्रा है। ग़ज़वा ओहद हुई थी यहाँ, जंग ओहद। ये सामने जो पहाड़ है इसका नाम है जबल रोमा। इसके ऊपर 50 तीरंदाज खड़े किए थे, जिनको सख्ती से कहा था कि इससे नीचे नहीं आना, चाहे जो हो जाए। लेकिन पहले स्टेप में जब जंग हुई तो मुसलमानों ने समझा कि शायद फतह हो गई, तो जो तीरंदाज जहाँ खड़े थे वो नीचे उतर आए, जिसकी वजह से कुफार ने दोबारा हमला किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए और 70 शहदा हुए यहाँ, और कुछ ज़ख्मी हुए जो मदीना में जाके शहीद हो गए, जो जन्नतुल बकी में दफन है। ये जनाब हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है, ये जो पहली है। और इसके साथ जो है आगे उसमें 2 शहीद हैं, एक हज़रत मुसअब बिन उमैर और जनाब अब्दुल्ला बिन जहश। और बिल्कुल ये पीछे यहाँ 67 तकरीबन शहदा दफन है। ठीक है, ये है अस्सलामु अलैका या अम्मी रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मी हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मी नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अम्मी शफी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अस्सलामु अलैका या अखी अबू तालिब, अस्सलामु अलैका या अखी अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अस्सलामु अलैका या अम्मी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या जद्दुल फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैका या जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यदी शबाब अहलिल जन्नह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। ये ओहद का पहाड़ है पीछे, ये देखें सारा ओहद का पहाड़। ये अभी मस्जिद बनाई है जिसका नाम मस्जिद शोहदा है। ठीक। Donc là, nous avons 3 frères, Janabi Abbas ibn Abdul Muttalib, Janabi Hamza ibn Abdul Janabi Abu Talib, le papa d'Imam Ali alayhi salam. J'étais 3 frères. Donc là, pendant la bataille de Uhud, Janabi Hamza alayhi salam, il est enterré ici.
le prophète il avait donné l'ordre que les archers restent là-bas sur place. Et quand il y a eu la victoire des musulmans, les archers, en voyant le butin, ils ont trahi le saint prophète et ils sont descendus de cette colline. Et en voyant ça, l'ennemi, il a réattaqué et il a blessé Janabi Hamza alayhi salam. Donc là, Hind, आपका ये देखो, ये उंगलियां काटी, नाक, होंठ, कान, पाँव की उंगलियां ये काट के ना उसने हार बना के पहना। जी कब्र मुबारक जनाब हमजा अलैहिस्सलाम। અને ઓલી તરફ શોહદાની કબરો છે. અહીંયા એ મસ્જિદ છે કે જ્યારે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઓહદની જંગ પછી અહીંયા આવેલા હતા, તે જખ્મી હતા, તો તે જગ્યા આપણે વિઝિટ કરીએ છીએ. એ જગ્યા છે કે અહીંયા રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તેમના સાથીઓ ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ રસૂલ ખુદા અહીંયા નમાઝ જમાત પઢાવતા હતા. ઓહદની લડાઈથી જ્યારે પોતે આવેલા હતા જખ્મી થઈને, તો અહીંયા આ જગ્યા પર પોતે આરામ કર્યા હતા. Donc cet endroit, c'est un masjid où notre saint prophète, le bien-aimé d'Allah, au retour de la guerre de Ohad, il était venu là en étant blessé. Donc il s'est reposé à cet endroit qui est devenu une mosquée. Donc il était blessé, il avait perdu Janabi Hamza alayhi salam. En étant blessé, il a fait un repos à cet endroit. Donc là, nous allons voir, là où il était assis, il y a eu les traces de son dos sur la montagne. Nous allons prendre des photos et des vidéos. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Donc c'est la montagne de Ohud. અહીંયા છે પહાડ, ઓહદનો પહાડ, કે જ્યાં બાજુમાં રસૂલ ખુદા અને તેમના સાથીઓ જનાબે હમઝા અલી સલામ તેઓ અહીંયા જંગ કર્યા હતા, જંગે ઓહદ. अस्सलाम वालेकुम। ये वो मकाम है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस जगह पे जहाँ ये आदमी बोसा दे रहा है, यहाँ आके अपना सर मुबारक रखा था और आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, आपको चक्कर आए थे जहाँ खड़े हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, जहाँ ये हाजी अंदर जा रहा है, जहाँ आपकी पुश्त मुबारक का निशान है, जहाँ बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। और ये वो एरिया जहाँ जुल्फ़िकार नाजिल हुई थी। ये सामने मस्जिद है, मस्जिद फसख। इसी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक नमाजें पढ़ाई थी। Donc à cet endroit-là que notre bien-aimé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est reposé à cet endroit-là en venant de la guerre de Ohad. En venant de la bataille d'Ohad, il s'est reposé. Donc l'endroit, il est resté encore. Et à l'intérieur, il y a une grotte où il y a les traces de son dos. Donc là, nous avons les traces du dos de notre prophète bien-aimé qui s'est reposé ici en étant blessé en venant de la bataille de Ohad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. ઓલી તરફ તમને મસ્જિદ મોબાઈલ હતી કે અટાણે લોકોમાં ભાંગી નાખ્યા છે. એ જે મસ્જિદ હતી કે જે રસૂલ ખુદા તેમના ફેમિલીને સાથે જે ઓલા ક્રિશ્ચન લોકો હતા, પાદરીઓ આવેલા હતા, તેમના સામે પોતે દેખી કર્યા હતા અને જે આયત આવી હતી અનફોસના વનફોસકમની તે અહીંયા તે આયત નાઝિલ થઈ હતી. أشهد
Sama jauh mati, porta numero 1 ma, porta numero 1 mati, sama jauh no resto itu. यहाँ से बाबू सलाम रोज़े रसूल ने ज़ियारत करवा मटे यहाँ गेट numero 1 mati, दाखिल थवान हुई थी. Assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum Khatamun Nabiyyin, que la paix soit sur vous, les choses des prophètes. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil faraj. دي ويقولوا مثلا دي تعبير كتير بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك خاتم النبي، السلام عليك. ده واقع ده بيجيب ده. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك خاتم النبي. Mimbar Rasul છે અને જે જગા છે ત્યાં જન્નતનો કટકો હોય છે. Gracias.
Dia buat apa yang kasih? Ya Zahra, Ya Aba Zahra, Ya Aba Zahra, Ya Aba Zahra. Assalamu alaikum ya Rasulullah, Khatim al-Anbiya wal Mursalin, Ya Aba Zahra. Haji Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kubur mubarak, Ya Aba Zahra, Ya Aba Zahra. C'est la tombe de notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, salam ya Muhammad, ya Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa yang masjid no film paru nasib tu છે ai masjid છે કે જ્યાં રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તેઓ અહીંયા આવેલા હતા. તેમના દીકરા તેમના નવાસ હસનૈન હસન હુસૈન સાથ લઈને અહીંયા આવેલા હતા, કારણ કે અહીંયા શેષ રેસ હતી, વરસાદ નહોતો પડતો, તો તેઓ અહીંયા આવ્યા તેમના નવાસાનો વાસ્તો દઈ અને દુઆ માંગ્યા અને અહીંયા આ શહેરમાં મદીના શહેરમાં વરસાદ પડતો થઈ ગયો. સુબહાનલ્લાહ. અને અહીં પણ મસ્જિદ છે કે જ્યાં પોતે રસૂલ પાક અહીંયા નમાઝ પઢાવ્યા હતા. બે ઈદની નમાઝ અહીંયા પોતે પઢાવ્યા હતા વરસાદ માટે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. આપણે આજે મસ્જિદ છે ને ફિલ્મ પાડી રહ્યા છે. જ્યારે અહીંયા ભૂખમરો હતો, શેષરેસ હતો, વરસાદ નહોતો પડતો, તો આપણા રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ તેમના નવાસાને લઈ હસનને લઈ અને અહીંયા નમાઝ પઢ્યા હતા અને દુઆ માંગ્યા હતા અને તેઓની દુઆ કબૂલ થઈ હતી. સુબહાનલ્લાહ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ વાજિલ ફરજો. આ છે તમને મળશે sortie porte 310 પછી. sortie porte 310 પછી તમને આ જગા હિસ્ટોરિક જગા ઇસ્લામની કે જે અહલુલ બેતથી લીએ છે તે તમને અહીંયા મળશે. ચલો આપણે અંદરમાં 2 રકાત નમાઝ અદા કરીએ यहाँ बातमा सर्वे तरफ इंशाल्लाह. Donc là nous avons eu le tawfiq de visiter cette mosquée ancienne, là où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Il était venu ici faire des prières pour avoir de la pluie. Il avait amené ses deux petits-fils, Imam Hassan et Imam Hussein, et ils ont fait des prières et des invocations pour que la pluie tombe. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah et par le wasila de ces deux bien-aimés, les petits-fils du prophète, les habitants de la Médina, les habitants ont eu de la pluie. Subhanallah. Après c'est Masjid Al-Gamama andar છે કે જ્યાં મસ્જિદમાં રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ બે ઈદની નમાઝ પઢાવ્યા હતા અને વરસાદની નમાઝ અહીંયા પર પઢાવ્યા હતા. હસનને સાથે લઈને અહીં આવેલા હતા જેથી કરીને જે શેષરેસ હતી તેને હલ કરવા માટે તે અહીંયા નમાઝ પઢ્યા, દુઆ માંગ્યા અને ખુદાના ફઝલ કરમથી વરસાદ પડતો થઈ ગયો. તો આ જગા છે ત્યાં આપણને નસીબ તો છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. આપણે અહીંયા 2 રકાત નમાઝ પઢ્યા નિયાબતની સર્વે મોમિનો તરફથી, વાલિદાન તરફથી, સગાવાલા સર્વે તરફથી આપણે 2 રકાત નમાઝ પઢ્યા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબિલ આલમીન. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons la chance de visiter la mosquée Gamama. C'est dans cette mosquée, en face de Rawda al-Rasoul, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec ses petits-fils, Al-Hassan et Hussein, pour prier et pour faire l'invocation pour que la pluie puisse tomber. Grâce au wasila de ces deux nobles personnes, Al-Hassanain, Dieu a fait que la pluie tombe sur cette ville Al-Madine, Al-Madine Munawwara. Grâce à l'invocation du saint prophète et ses deux petits-fils, ils ont eu la pluie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous prions que ceux qui n'ont pas encore eu la chance de visiter ce lieu, qu'ils puissent visiter, Inch'Allah. C'est du côté de la sortie 310, à la sortie à Madinah Munawwara, là où il y a le Rawda. À la sortie 310, vous allez trouver cette mosquée qui est ancienne de l'extérieur. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Atrafni visitement après le nasib tout c'est Masjid Imam Ali alayhi salam qui est sorti 313 c'est sorti 313 Madinah Munawwara Jerusalem après nikre et પછી તમને દેખાશે મસ્જિદ ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ કે જે ન્યાસ હોટલના સામે છે. તો તેની પણ આપણે વિઝિટ કરે છે ને ઇન્શાલ્લાહ ત્યાં બાદમાં સર્વે તરફથી આપણે 2 રકાત નમાઝ પઢશું. InsyaAllah Imam Ali alayhi salamની મસ્જિદ Ali ibn Abi Talib તેમની મસ્જિદને આપણે ઝિયારત કરી રહ્યા છીએ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. J'avais la chance de visiter la mosquée d'Imam Ali alayhi salam qui se trouve à Rawda al-Rasoul, à la sortie après la sortie 313. Vous allez trouver cette vestige au nom d'Imam Ali alayhi salam. Là c'est écrit La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Ya Abul Hasan Hasanen na baba તમારો પર સલામ થઈ. Ya Abu Turab તમારો પર સલામ થઈ. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad.
Machallah, donc là, nous sommes à l'intérieur de la mosquée d'Imam Ali alayhi salam, qui se trouve à la sortie 313, sortie de Masjid al-Nabawi. Donc, nous avons eu la chance de visiter cette noble mosquée au nom du défenseur du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était là, toujours présent dans toutes les batailles, qui a soutenu le prophète, qui a soutenu la mission divine. Donc nous faisons 2 rakats namaz au nom de tous les croyants, Inch'Allah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil farajum. Salam ya ayyuhal bakiyah. Salam ya ayyuhal bakiyah. Ini orang-orang mana yang batuk kok? सामने तुमने उमुल बनीन ने कब्र अमल से जनाब उमुल बनीन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने माता जी ने कब्र और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज ની તારીખ છે 19 નવેમ્બર 2024. ખુદાના ફઝલ કરમથી આપણને જનાબી બિલાલ અલૈહિસ્સલામની મસ્જિદની ઝિયારત કરવું નસીબ થયું છે. એ બિલાલ હતા કે જે સાહેબ રસૂલ હતા અને ઇમામ અલીના પણ સાહેબ હતા. તે એટલા દેવભોય હતા કે પોતે ખુદાનો અહદ કહેતા હતા અને એના છાતી ઉપર પથ્થરો રાખવામાં આવેલા હતા. કુફારે મક્કા લોકો તેને એટલું અઝિયત આપતા હતા કે ના માન, તારા રબને ના માન, અને આ જે ભૂતો છે એની જ તો પૂજા કર. પણ જનાબી બિલાલ તે એનું કોન્વિક્શન ફેર્મ હતો ને તે પોતે બદલાવ્યા જ ના છેલ્લે સુધી, અને છેલ્લે સુધી પોતે વફાદાર રહ્યા રસૂલુલ્લાહના ને તેમ ઇમામ અલીના. તો ચલો આપણે જનાબી બિલાલ હબશીની ઝિયારત કરીએ છીએ નિયાબતમાં સર્વે મુમિનો તરફથી, દોસ્તારો તરફથી ઇન્શાઅલ્લાહ.